यो फसलका गउँगिना बस्ने देखा काठमाडौँमा घरमा भाडा लाउने ब्याङ्कको ब्याज 16% 18% थियो आज 6% मा लियो के हुँदैछ हौ यो धर्म बड़ा या कर्म ये गुड क्वेश्चन आप पहले बताइए कर्म बताऊं आप किसी का मानते हैं हम मानते हैं कर्म में पूजा पूजा से भगवान है आप भी गलती कर रहे हैं आपने प्रश्न किया धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है और आपने माना कि कर्म बड़ा है हमने आपको बताया देखिए धर्म और कर्म पहले तो आप ये जानिए कि कर्म क्या है आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं ये भी तो आप कर्म कर रहे हैं आपका दिल अंदर धड़क रहा है वो भी तो अपना कर्म कर रहा है कसाई गाय काट रहा वो भी तो अपना कर्म कर रहा है कर्म तब बड़ा बनेगा जब धर्म से जुड़ेगा धर्म युक्त कर्म है तो पूजा है यदि आपने धर्म युक्त कर्म नहीं किया तो वो कर्म पूजा कैसे बनेगा धर्म बड़ा या कर्म ये गुड क्वेश्चन आप पहले बताइए कर्म बताऊं तो आप किसी का मानते हैं हम मानते हैं कर्म में पूजा है पूजा से भगवान है आप भी गलती कर रहे हैं आपने प्रश्न किया धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है और आपने माना कि कर्म बड़ा है हमने आपको बताया देखिए धर्म और कर्म पहले तो आप ये जानिए कि कर्म क्या है आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं ये भी तो आप कर्म कर रहे हैं आपका दिल अंदर दोस्तों यह है भारत की सबसे बड़ी तांत्रिक अघोरी माता इन अघोरी माता के पास मां काली की कौलेश्वरी शक्तियां हैं लोग इन्हें प्रेतनाथिनी अघोरी माता भी कहते हैं इनकी शक्ति को देखकर लोगों की रूह कांप जाती है इनके द्वारा बताई गई हर बात पत्थर की लकीर साबित होती है ये माता बनारस में मणिकर्णिका श्मशान घाट पर रहती है श्मशान की राख खाती है शरीर पर लगाती है ये माता लोगों को किया कराया ऊपरी चक्कर से हाथों हाथ मुक्ति दिलाती है यदि इन्होंने किसी को बता दिया कि कल उसका अंतिम सांस है तो वह उसका आखिरी दिन होता है इन माता से उलझने से तांत्रिक भी डरते हैं इनके दर्शन का प्रभाव इतना प्रबल है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इनसे जो मांगे उसकी हर मनोकामना जल्दी पूरी होती है इन भैरवी तांत्रिका को एक लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों यह है भारत की सबसे बड़ी तांत्रिक अघोरी माता इन अघोरी माता के पास मां काली की कौलेश्वरी शक्तियां हैं लोग इन्हें प्रेतनाथिनी अघोरी माता भी कहते हैं इनकी शक्ति को देखकर लोगों की रूह कांप जाती है इनके द्वारा बताई गई हर बात पत्थर की लकीर साबित होती है ये माता बनारस में मणिकर्णिका श्मशान घाट पर रहती है श्मशान की राख खाती है शरीर
है